begin now. Thank you. Yeah. So last week we looked at Acts chapter 9 verses 1 to 18. Today we proceed further from 19 onwards. Okay. Now, what happened when Saul's sight was restored and he gained some strength? Okay. Yeah, I think no Hindi right now. Okay, so it's fine. Yeah. Any answer? What Saul's? What happened once Saul's sight was restored and he gained some strength? Okay. Yeah. Anyone? Anyone? सॉल फिर से देखने लग गया तो उसके बाद उसने क्या क्या हम उसमें फर्क देखते हैं एनीवन Anyone? Hello. It's why is it so difficult? What different? I think they are reading now. Yes. What difference do we see in Saul? I think maybe okay. He got baptized. He got baptized, and then what is he doing then? What do we see him do? Yeah. Acts 19. Kitty has just joined. Yes, what do we see Paul doing in Acts 19? 19:20, what do we see? He began to preach in the synagogue that Jesus is the Son of God. Correct. Correct, yeah. Began to preach, okay. Now we see that Paul underwent a radical change. What is the change that you notice in Paul? Before the encounter and after encounter with God. Yeah, what's the difference? Parivartan before his encounter with Christ and after, what's the difference? What do we see? Anyone? Yeah, previously he was Jesus' enemy, and later he became a big apostle. Correct, correct. Correct. He started preaching Christ. Someone who was against Christ, he was preaching Christ now. Yeah. What was the focus of Saul's message? Achha. Saul's message. Hello, welcome. What was he teaching? Yeah, That Jesus is the Son of God. Yeah, right. that Jesus is He the was Son of God. teaching that Jesus is the Son of God. Hello, welcome Auntie Walker. Welcome Auntie Walker, Auntie Sheila Walker. It's good to see you. Yes, go ahead. Now, I mean, we've seen Paul change from someone who was a Christian, who was persecuting Christians, to someone who became the biggest apostle for Christ. And what kind of changes? It's time to think. What kind of changes have come in us, or has any change come in us after knowing Jesus? Has any change come in us? Okay. क्या There is something to reflect upon. तो प्रभु में आने के बाद क्या हमारे जीवन में भी परिवर्तन आया है या नहीं, इसके बारे में हमको सोचना है। जैसे पौलुस के जीवन में हम देखते कि वो परमेश्वर का शत्रु था, लेकिन अभी वो प्रभु का दास बन गया है, उसका प्रचारक कर रहा है। तो कैसे हमारे जीवन में आज क्या परिवर्तन आया यीशु को मिलने के बाद, यीशु को ग्रहण करने के बाद? Yeah. Okay, now that he has started, how did the people react to their former enemy? How did the people react? Can you point to which verse you're looking at? I'm still at
21. यस 21, हाँ वचन 21 के अनुसार, 21 के अनुसार अगर हम वचन 21 को देखते हैं तो उसके जो दूसरे लोगों को पे क्या प्रभाव पड़ा कि यार ये तो प्रभु का शत्रु था, प्रभु के खिलाफ था, लेकिन आज वो परमेश्वर के नाम का प्रचार कर रहा है, तो उनका रिएक्शन क्या था, कोई बता सकता है? They were stunned. They were stunned. Yes, they were surprised. Totally. Yes. Amazing, no? They What a were, sight. they were amazed. They said, no, is it not the one who destroyed those who called on this name in Jerusalem? Yes, yes, okay. Yeah. Welcome, Aunt. Welcome, Sister Anita. Welcome, welcome. Yeah. Correct. Now, how did the Jewish community in Damascus react to Saul and his preaching? यहूदी की जो जमात थी, उनकी क्या प्रतिक्रिया थी जब उन्होंने पौलुस को देखा? यानी वो तो पहले उनके पार्टी का था, तो उनको कैसे लगा कि यार ये तो हमारे दुश्मनों के, तो उनको क्या लगा होगा, बताइए? Anyone? They conspired to kill him. Yes. Okay. Yeah, they were also surprised. No? They were confounded. Yeah, Auntie Walker? Yeah, same thing. Yes, yes, correct. Okay. Go ahead. Yeah. And what was the Jews' plan for Saul? Okay, यहूदियों ने क्या साजिश रची पौलुस के लिए, बताइए? What was their plan? To kill him, no? Yeah, they conspired to kill him. Yes. Correct. And it is written, and now after many days were passed, the Jews plotted to kill him. Any idea how many days, were the many days that is referred to here? वचन 23 में लिखा है बहुत दिन के बाद। ये बहुत दिन आपके हिसाब से लगभग कितने दिन हुए रहेंगे जब उन्होंने सोचा कि चलो इसको मार डालते? Anyone? The same, but 25, I think it is 25, परंतु रात को उसके चेलों ने उसे लेकर टोकरी में बिठाया। नहीं, we are in verse 23. Verse 23. दिन बीत गए तो यूहन्ना ने मिलकर उसके मार डालने की युक्ति निकाली, परंतु शाऊल और भी, but then 23 फिराने के लिए रात दिन How many days? I mean, he is saying after many days the Jews plotted to kill. So approximately what would, any ideas? After so many days means it is not that exactly so many days, because it is after जब बहुत दिन बीत गए, after so many days that they thought of it, but then down it says that it is the same night. Okay. Actually, in Galatians 13 to 18, Paul says that he was there for almost 3 years. अच्छा, तो यहाँ पे जो बहुत दिन बताए गए तो लिखा गया कि 3 साल के बाद उन्होंने ये साजिश रची थी। गलतियों के 3रा अध्याय में लिखा गया है, तो ये 3 साल के बाद उन्होंने ये सोचा था। ओके, ऑल राइट। Now, who was trying to capture and kill Saul? कौन सॉल की जान के पीछे पड़ा था, कोई बता सकता है? पौलुस की जान के पीछे कौन पड़ा था? Anyone? The Jews. The Jews. Okay, Yahudi, correct. Welcome, Sister Aruna has joined, I think. Yeah.
Welcome sister Aruna and welcome sister Neha also just joining. Yes, बताइए. Yeah, Yahudi, correct. Yeah, the Jews on Damascus were trying to, along with the local governor and his garrison on their side, they were trying to kill Saul. Now, how does Saul escape from this? 25th verse. हाँ, correct. हाँ. तो पौलुस इनकी साजिश मारने की साजिश जो वो बन रहे तो उनसे वो कैसे बच गया? कोई बता सकता है? Anyone? उसको क्या टोकरी किया उसने? that 25th verse ना उसके हाँ. चेलों उसे लेकर टोकरे में Correct. Yes, टोकरी में. They put him in a basket. हाँ Put him in a basket and let him out through a window in the wall. हाँ, ठीक है. Yes, yes. वचन 25 में लिखा आंसर, correct. Yeah. Okay, next. Now, why do you think, I mean, a city wall is supposed to protect the city from external aggression? Why should it have such big windows through which people could, through which such a big basket could pass? Any idea? ये जो दीवार थी जो शहर को पूरी तरह से घेरे हुई थी, इस दीवार में ऐसी एक विंडो खिड़की होने का क्या कारण हो सकता है जहां से उन्होंने पौलुस को नीचे उतारा? क्या कोई बता सकता है? ये अजीब नहीं है क्या कि एक बड़ी दीवार जो शहर को घेरे हुए उसमें एक बड़ी सी दीवार भी है? कोई बता सकता है बड़ी सी खिड़की इसका रहस्य? एनीवन? Maybe if somebody wanted to escape, then they wouldn't be, if the enemy was at the door, then they wouldn't be able to go by the gates. So maybe some windows were there too. But the enemy could come in through the windows. If that was So it. yes. it's like Yes. it reminds like Rahab, how she it to spies. Yeah, it harks back to the Old Testament also. Yes. Yeah. Actually, in the Middle Eastern city walls, they had the walls contained the living quarters also. So they had windows there, and from there, these people could attack the invaders who was coming from outside. It was also used as a point of attack. I mean, to safeguard the walls, to safeguard the city. Yes. During times of war. Okay. तो एक so ये था उस खिड़की का रहस्य जो can you just tell again, Manoj? The Middle Eastern city walls in those days they also contained the living quarters with windows. I mean, people were living there, and from these windows, the invaders, whoever was coming to attack the walls, the people inside could attack the invaders through these windows. Okay. तो ये जो खिड़की का ये था कि खिड़की से अंदर कोई अगर शहर पे आक्रमण कर रहा है तो उस खिड़की से वो उसके ऊपर फिर से आक्रमण कर सकते हैं सामने से. तो ये उसका मतलब था खिड़की होने का. It was a defense thing. I mean, people could throw spears or whatever from the top to the invaders coming below. ठीक है. तो ये सामना करने के लिए दुश्मन का सामना करने के लिए ऐसी खिड़की बनाए गए थे. Good. Now, after this, where does Saul go? तो इसके बाद सौलोस कहाँ जाता है? After escaping from Damascus. Okay, after escaping from Damascus, सौलोस कहाँ जाता है? जब वो दीवार से उसको उतारा जाता है शहर के बाहर, फिर वो कहाँ चले जाता है? Anyone? Jerusalem. Yeah, right. And what did he try to do there? He tried to join the disciples. Right, and what was the disciples' reaction when he tried to? They were join the afraid. disciples? They were afraid of him. यहाँ पे हम देखते हैं कि सौलोस वहां से भाग जाने के बाद उसको दूर करने के बाद, छुड़ाने के बाद
वो यरूशलेम जाता है और वो शिष्यों से मिलने की कोशिश करता है। तो यहाँ पे पूछा गया है कि शिष्यों का क्या अनुभव होता है कि पौलुस को देख के क्या उसको वो वेलकम करते हैं, उससे डरते हैं? They couldn't believe na that he is disciple. Yes, correct. वो डर गए, correct. They were very afraid. They were afraid, yes. Yes, yes, correct. Probably because Saul came back alone to Jerusalem. There was no one to witness what he has done in Damascus. They Yes. probably thought it was a trap. हाँ, क्योंकि वो अकेला भाग के आया था, उसके साथ कोई नहीं था उसकी गवाही देने के लिए, उसको सच साबित करने के लिए। तो उनको लगा ये शायद कोई षड्यंत्र हो सकता है उनको घेरने के लिए, उनको पकड़ने के लिए। Now, who served as a peacemaker when Saul went to Jerusalem? I mean, when the disciples were not accepting him, who was the one who? Barnabas. Yes, it Yes. is spoken. Yes, तो कौन था जिसने सुलह कराया? क्योंकि जब अपने प्रभु यीशु के शिष्य थे वो डर रहे थे उसको स्वीकार करने के लिए, लेकिन तो कौन था जिसने पॉल की तरफ से मध्यस्थी की? तो वो था बारनबस। ओके, यस यस। Now, why do you think Barnabas was willing to take Paul to the disciples? Why do you think he believed? हाँ, आपको क्या लगता है बारनबस ने ये ऐसा विश्वास कैसे जताया, जो कि ऐसे व्यक्ति पे जो उनका खून का प्यासा था? तो बारनबस को भी दूसरे शिष्यों की तरह डरना चाहिए था या संदेह करना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे तो हम देखते कि बारनबस पौलुस की तरफदारी करता है, उस पर विश्वास रखता है, उसकी वकालत करता है शिष्यों की प्रति। तो ये हम कैसे चमत्कार देखते कि बारनबस ने क्यों किया होगा ऐसा? कोई बता सकता है? 27 verse, no? The full. How he spoke with boldness about the gospel, about Jesus. So he heard. Barnabas heard him. ओके, बारनबस ने जो किया यहाँ पे बताया गया, लेकिन क्यों किया? Why he did that? आपको क्या लगता है? Why do you think he did? Yeah, because Barnabas was there with him. He saw everything, na? ओके, कसा बोलला आणि येशूच्या नावाने डिमिस करताना. How immediately after. अच्छा, I don't know about that. ये बारनबस उसके साथ तो नहीं था उस टाइम पे ना? He was not there. He was not there at the time of the encounter. तो बारनबस ने क्यों विश्वास रखा, इतना बड़ा रिस्क क्यों मोड़ लिया? आपको क्या लगता है कि एक दुश्मन की वकालत की उसने कि हाँ ये सच्ची में बदल गया है, प्रभु का दर्शन हुआ है? आपको क्या लगता है क्या वजह होगी कि बारनबस ने पौलुस की तरफदारी की, एक दुश्मन की तरफदारी की? बताइए। Maybe it's Ananias. बिकॉज ऑफ अनानियस, अनानियस ने बारनबस को व्हाट्सएप कॉल करके बताया। No, it is the Holy Spirit. Huh? God has done. Here it is given, no, verse 27. अच्छा, हाँ, लेकिन क्यों किया? सो आंटी वॉकर से कि पवित्र आत्मा ने ट्रांसमिशन किया मैसेज। That would be the right answer. I mean, the most significant, shortest, and the most significant answer is that he was influenced by the Holy Spirit. Correct. तो Christ influenced Barnabas and showed him that Paul was truly converted. करेक्ट। तो हम ये कर सकते कि परमेश्वर ने बारनबस को बताया होगा उसकी पवित्र आत्मा के द्वारा, तो जिसके वजह से उसको विश्वास रखा। तो दैट्स करेक्ट आंटी वॉकर, वेरी गुड आंसर, थैंक यू। And now, what are the lessons that we can learn from the action of Barnabas? तो बारनबस की इस मध्यस्थी के कारण या जिस तरह उसने उसकी वकालत की, उसकी तरफदारी की, ये जो आउटस्टैंडिंग काम बारनबस ने किया, इससे हम क्या सीख सकते हैं? क्या हमें सीख मिलते हैं मसीह लोगों? एनीवन? You must have the discerning spirit. हाँ, Must have the discerning spirit. must have a desiring spirit. Okay, sister Neha, sister Aruna, sister Anita.
आपको क्या लगता है? एनीवन, व्हाट डू यू थिंक? यस, परमेश्वर के आत्मा जो डिसर्नमेंट है उसके द्वारा प्रभु हमें आत्माओं की परख देता है, ये मैंने सीखा। परमेश्वर की परमेश्वर हमें आत्मा परख का जो एक वरदान है, डिसर्नमेंट जिसे बोलते हैं, वो प्रभु हमें देता है, उससे हम सीख सकते हैं, समझ सकते हैं। ओके, तो बारनब, हाँ ठीक है, तो सिस्टर अरुणा कह रही है कि बारनबास को जैसे पवित्र आत्मा ने ये बताया, तो हमको भी पवित्र आत्मा का दान चाहिए कि अद्भुत चीजों को हम समझ सके, जो हमें आसानी से दान नहीं, दान That's one पवित्र word. आत्मा ऑलरेडी मिल चुका है, बट द डिसर्नमेंट जो परख आत्मा है, हाँ, गिफ्ट ऑफ डिसर्नमेंट ना, गिफ्ट ऑफ डिसर्नमेंट, हाँ, तो हाँ जी पास्टर। पवित्र आत्मा की जो one अनमोल thing भेंट है, would be that स्पिरिचुअल गिफ्ट। he was willing to listen to the Holy Spirit, no? Yeah. हाँ, तो यहाँ पे हम देखते हैं कि बारनबास पवित्र आत्मा को सुनने के लिए सिर्फ उसकी आंखों पे भरोसा नहीं कर रहा, वो जो सामने दिखता है, लेकिन वो पवित्र आत्मा क्या कहता है किसी भी केस सिचुएशन के बारे में, ये जानने के लिए वो तैयार था, रेडी था। What was he risking when Barnabas was supporting Paul? What was he risking? इसमें क्या रिस्क था, इसमें क्या धोखा हो सकता था जिस समय बारनबास पौलुस की तरफदारी करने के लिए राजी हो गया? कोई बता सकता है? And even Barnabas, though he has taken his side, of course it is through the Holy Spirit, but the people were around them still that they wanted to kill Saul because they didn't believe how Saul became Paul. Okay. Okay. और कोई आंसर? Any other answers? Yeah, Sanu was saying something. Okay. Risking his life. वो अपना जीवन धोखे में डाल रहा था, वो खुद मर सकता था। Okay. That could be an answer, yes. Okay. Anything else? Anything? Any और other कोई ideas? चीज? Yeah, I think Barnabas is also called the son of encouragement. Encouragement. हाँ, Yeah. तो उसकी एक खूबी थी लोगों को प्रोत्साहन देने की। Correct. तो वो जो हमेशा गिरे हुए हैं, जो हारे हुए, वो हमेशा उनकी तरफदारी करता था, जो वीक था वो उसके स्वभाव में भी था। तो ये भी एक चीज है। Also, if you see, Barnabas was close to the disciples. Now, when he is supporting Paul, in a way, he was putting his relationship with the disciples on the line. करेक्ट, गुड पॉइंट। तो यहाँ पे हम देखते हैं और एक खास बात कि बारनबास जो कि शिष्यों की तरफ का था, लेकिन जब वो पौलुस की तरफदारी करता है, जो कि परमेश्वर के लोगों का दुश्मन हुआ करता था, तो वो अपने जो रिलेशंस थी, अपने जो दोस्ती थी, अपनी जो संबंध था शिष्यों के साथ, उसको तोड़ने का रिस्क भी उठा रहा था। आप समझ सकते हैं कितना बड़ा सैक्रिफाइस था उसकी तरफ से। And also, it points to the fact that Barnabas truly believed that knowing Christ could change anyone's life, including Saul's. और भी हम एक चीज देखते हैं कि बारनबास को ये विश्वास था कि प्रभु यीशु को जो भी अपनाता है, जो भी उसको उसका दर्शन ग्रहण करता है, वो उसका जीवन चाहे कोई भी हो, चाहे दुश्मन भी हो, उसका जीवन में पूरा परिवर्तन आ सकता है। Now, if Barnabas sets an example for us to follow, how can we be like him? Or maybe what I would say is, when was the last time we have been a Barnabas for someone? When we have stood up, when we have stood in the gap for someone? तो अगर हमको बारनबास का अनुकरण करना है आज की तारीख में, तो क्या हम ऐसा कर सकते हैं? और अगर हमको लगता है कि हाँ ऐसा कर सकते हैं, तो क्या आपने किसी के जीवन, किसी ऐसे व्यक्ति के लिए आपने बारनबास जैसी भूमिका निभाई है? क्या कोई अनुभव है? क्या आपने किया हो? ओके सिस्टर अरुणा बताइए जल्दी से।
बिल्कुल कर सकते हैं हम। पिछले हफ्ते में मैं एक घर में हाउस विजिट के लिए जाती हूँ। नए विश्वास में आए लोग हैं, लेकिन जैसे उन्होंने मसीह को स्वीकार किया है तो उन आंटी के हस्बैंड और बेटे जो है उनका विरोध कर रहे हैं। तो प्रार्थना के समय में आंटी काफी रो रहे थे, फाइनेंशियली भी काफी चैलेंज था। तो सांत्वना देने का प्रभु ने मौका दिया वहां पे, और परिवार के लिए एक आशीष का प्रार्थना किया, वचन से उनको एनकरेज किया। तो उन्होंने पिछले हफ्ते ही यीशु मसीह को प्रभु और उद्धारकर्ता के रूप में भी स्वीकार किया। वो बातें मैं देख रही थी कि, और दूसरा ये है कि आज संसार में नजर उठा के देखें तो हर तरफ अशांति है, कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, संघर्ष हैं। ऐसे लोगों में हम जा करके शांति को स्थापित कर सकते हैं, उत्साहित कर सकते हैं लोगों को। Okay, thank you, Sister Aruna. Anyone else? Okay, but it's important कि हमको सिर्फ पौलुस को नहीं देखना, हमको बारनबास को भी देखना, और उसके जैसा भी जीवन कि हमको भी ऐसे लोगों की तरफदारी करनी चाहिए जिसपे कोई विश्वास नहीं करना चाहता, जिसको कोई अपनाना नहीं चाहता। ये भी जरूरी है। Yeah, we should be willing to accept the outsider. हाँ, and the enemy. Yeah, also okay. Okay. Okay, now दुश्मन पे प्यार करना। now what did Saul do in Jerusalem? While he was in Jerusalem, what did he do? तो यरूशलेम में पहुंचने के बाद पौलुस ने क्या किया? जब वो यरूशलेम में आया तो उसने क्या किया, कोई बता सकता है? Verse 29. 28-29, yes. करेक्ट। 28-29 में क्या कर रहा था, कोई बता सकता है अपने शब्दों में? Can you share in your own words? What did he do? He was talking with interacting with the Jews and Gentiles. Yes, interacting with the Jews and Gentiles. He spoke boldly. Boldly, yeah. अच्छा, okay. Anyone else? और कोई answer? Sister Mary James, any answer from you? Was preaching boldly in the name of Lord. Okay, very good, very good, excellent, excellent. We are praying you and others also become bold like that. Yes, yes. Go ahead. So Paul was actually he resumed Stephen's work, no? Stephen, what was Stephen doing? He was debating with the Hellenistic Jews. Correct. Yeah, that's a good clue. हाँ, तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जो हेलेनी यहूदी है, जिनको स्टीफन जिनसे प्रभु में लाना चाहता था, तो उसने वो काम को शुरू रखा और उनसे वाद विवाद करना फिर से शुरू किया, क्योंकि वो उनको प्रभु के लिए जीतना चाहता था। स्टीफन का जो अधूरा काम था वो जीता। वो दैट्स अ ब्रिलियंट इनसाइट। ग्रेट, ग्रेट। Because Paul himself was a Hellenist, as Stephen was. He was born and brought up in Tarsus. करेक्ट। तो वो खुद भी एक हेलेनी यहूदी हुआ करता था, और जिसके वजह से उसको शायद स्टीफन का ज्यादा गुस्सा आया था, लेकिन अभी वो समझ गया है प्रभु यीशु को, फिर से वो स्टीफन का अधूरा काम को पूरा कर रहा है। देखिए कितनी सुंदर बात है। Yes. Who were the Hellenists who tried to kill Saul? I mean, ये हेलेनी लोग कौन थे? हेलेनी यहूदी जिनके बारे में बताया गया है 29 में, ये कौन लोग थे? कोई बता सकता है फिर से? वर्स 29, ये हेलेनी लोग कौन थे? क्विकली। Greek speaking Jews. Greek speaking Jews. Right? Yes, yes, correct. Excellent. They were actually the Jews from the synagogue of freedmen, no? Like the previous chapter we have learned, with whom Stephen was discussing, debating, the same people. Correct. तो इजराइल के बाहर जो रह रहे थे, जो वास्तव्य कर रहे थे, तो वो थे रोम के नीचे, तो इसलिए उनको भाषा ग्रीक हो चुकी थी, लेकिन फिर भी वो यहूदी, वो लोग थे। Yes. Now, when the other Christians came to know about the risk to his life, they sent Saul to Tarsus from Caesarea. Why did they send him to Tarsus? तो आप जब क्रिश्चियन मसीही लोगों ने देखा कि ये लोग गुस्सा हो रहे हैं और वो उसको खत्म कर सकते हैं, ये हेलेनी यहूदी,
तो उन्होंने उसको तारसस भेजा। तो तारसस क्यों भेजा उसको, पौलुस को? कोई बता सकता है तारसस इस जगह पे क्यों भेजा? एनीवन? मिसेस तोरा, किटी, सिस्टर अनीता, वन He प्लस। was Was from his Tarsus. birthplace. हाँ, Because it was his birthplace. it was his birthplace. Okay, that's a good answer. मिसेस तोरा ने कहा उसका जन्म किस वो, He was a Jew from Tarsus, so yes, most उसका probably home, he had a family over there or some connection, so he correct. would be away from the plot. हाँ, तो वो टारसस मानो मानो उसका गांव था जहां से वो एक्चुअली पैदा हुआ था, बड़ा हुआ था, तो फिर से उसको उसके घर भेज दिया, उसको रिस्क था इसलिए। यस। Now coming to verse 31, it says the church enjoyed a time of peace. Why did the church enjoy a time of peace? 31 वचन में लिखा है कि जो चर्च थी, जो कलीसिया थी सारे साम्राज्य में, उनको एक शांति का वक्त वो गुजार सके, एक अच्छा वक्त गुजार सके। तो ये क्यों हो गया, आपको क्या लगता है, क्या कारण था? Saul became Paul. हाँ, Saul, they were afraid of Saul, that he was persecutor. But when he became Paul, the telling about Jesus, now they came to know that no more he will kill them or persecute them. तो आंटी वॉकर कह रहे कि उनका जो दुश्मन तब तक था वो सौलोस खुद था दुश्मन, लेकिन अभी वो पॉल, उसमें परिवर्तन हो चुका है। इसके वजह से अभी उनका वैसा कोई बड़ा दुश्मन नहीं है जो उनको मारना चाहता है, इसलिए उनको एक चैन की सांस मिली। Yeah, is that correct, or there's any other answer you're expecting? Yeah, see, Saul was no longer persecuting the Christians. That is one. Number two, he had left Jerusalem because after becoming a Christian, when he was in Jerusalem, he was still a source of conflict. Correct. हाँ, तो now he was the target. So there was tension, there was problems. yes. And also the effect of the scattering of Christians. So there are not so many. There was the concentration of Christians in Jerusalem or in Israel was less. So Correct. generally there was peace. And of course, it was also the work of the Holy Spirit. तो यहाँ पे हम देखते हैं कि पौलुस यरूशलेम में था, प्रभु यीशु का प्रचार कर रहा था, हेलेनी लोगों के साथ वो उसका वाद विवाद, तो उसके वजह से काफी दुश्मनी बढ़ रही थी, टेंशन बढ़ रहा था। लेकिन क्योंकि अब वो वहां से निकल गया है, तो वो भी एक वजह थी जिसके वजह से वहां पे वो चैन की सांस ले सके। Now it also says now that the churches in Judea, Galilee, and Samaria had peace and were edified. Yeah. So what? meaning it was starting to grow and it was upheld. So now what is the strategy of growth that was used to grow the churches? तो अभी यहाँ पे लिखा गया कि जो चर्चेस थे यहूदिया, गलीला और समारिया में, तो यहाँ पे लिखा है कि वो कलीसिया में उन्नति होने लगी। तो ये कैसे उन्नति होने लगी, इसका क्या कारण हो सकता है, कोई बता सकता है? कोई स्ट्रैटेजी था क्या? कोई उनका कोई नियंत्रण, कोई उन्होंने कोई खास तरकीब इस्तेमाल की थी क्या कलीसिया की उन्नति के लिए? आपको क्या लगता है? प्रभूच्या भयात पवित्र समाधानात चालत. Holy Spirit, they were guided by the Holy Spirit and they were in the fear of God. करेक्ट. तो आंटी ने आंसर दिया है कि वो परमेश्वर के भय में रह रहे थे और पवित्र आत्मा की शांति में चल रहे थे, इसके वजह से कलीसिया में बढ़ाई हो गई. It is right, yeah. Correct answer. Yeah, their growth was the work of God, not the strategy of men. Yeah. Correct. Yes. Now going on to verse 32,
where is Lydda? It So- says Peter. अच्छा, लिड्डा ये शहर कहाँ पे पड़ता है आपके हिसाब से? Israel. Israel. इजराइल. ओके, करेक्ट. It was about 35 kilometers northwest of Jerusalem. ओके. And now he says that he came down to the saints who dwelt in Lydda. Who were the saints? ये जो यहाँ पे लिखा है कि लिड्डा में कुछ पवित्र जन वहां पे आके रहने लग गए, पवित्र लोग. ये कौन थे पवित्र लोग जो लिड्डा में आके रहने लग गए? कोई बता सकता है? The Christians there. क्रिश्चियंस लोग थे. ओके. People who came to Christ. First convert. जो विश्वासी जन है, जो जिनका परिवर्तन हो गया प्रभु में, वो लोग. ओके. एनीवन एल्स? ओके, मनोज. Yeah, the Christians, I mean the Correct. people, the believers. बिलीवर्स. ओके, विश्वासी लोग. I mean, all believers are saints. There are no special saints as such. हाँ, तो यहाँ पे हम सब भी पवित्र जन है, हम सब इस सेंट है. इस बाइबल स्टडी में भी जो लोग हैं वो सब सेंट है. सेंट मनोज, सेंट किटी, ऐसे सब. yes, go on. Why did Peter go through all parts of the country? अच्छा, पीटर दुनिया अलग अलग हिस्सों में क्यों गया, उस इजराइल के देश के? Because Jesus had commanded them, no? अच्छा, Matthew 28. करेक्ट. मत्ती के 28 में लिखा गया है कि आपको प्रचार करना है, तो इसके वजह से ये आंसर मिला है. एनी अदर आंसर? The Holy Spirit और कोई was भी आंसर leading है? him. Holy Spirit was leading him. ओके, पवित्र आत्मा उनको बुला रहा था, उनका आगे लेके जा रहा था, फॉलो Yeah, कर रहे that is थे. also right, yes. करेक्ट. Actually, the Jewish Christians who All had right, scattered Manoj. from Jerusalem, no, they had established Go ahead. churches all over Israel. So Peter was going there and he was being led by the Spirit, of course, he was going there and ministering to them. And he was also being prepared by God to initiate the evangelization of Gentiles. Hello. Yeah, can you say again? No, the Jewish Christians were scattered from Jerusalem, so they had gone to other parts of the country and they had established churches over there and they were multiplying in number. So Peter went to those churches to minister to them, being led by the Holy Spirit. And also he was being, slowly and steadily, God was initiating him into the evangelization of the Gentiles. ओके. तो यहाँ पे हम देखते हैं कि पेत्रस अलग अलग गांव क्यों घूम रहा था इजराइल के शहर शहर, क्योंकि बहुत सारे मसीह लोग यरूशलेम में सताव के कारण फैले हुए थे देश भर में, अलग अलग जगह पे. तो वो उनको जाके वहां पे प्रभु का वचन सुनाता था, उनकी सेवा कर रहा था. और दूसरी चीज थी कि जो अभी तक दूसरे जो लोग यीशु को नहीं जानते थे, वो लोग भी यीशु में आने वाले हैं, ऐसा पवित्र आत्मा उसको बता रहा था, एक विजन दे रहा था. यस. नेक्स्ट. As Peter continued his ministry, what happened in Lydda? लिड्डा में एक घटना हुई. कौन सी घटना हुई, कोई बता सकता है? पेत्रस. ओके. यस. एनीवन एल्स? कोई आंसर दे सकता है? पक्ष अनियास नावाचा एक मनुष्य आढळला. त्याला पक्षकाचा 8 वर्ष अंथरुणाला खेळलेला. There was one. अच्छा, तो name Aeneas. हाँ, करेक्ट. तो एक आदमी था जो बीमार था वहाँ 8 साल से, तो उसको चंगाई मिल गई. हाँ, ठीक है.
पेत्र के दौरान. ओके, नेक्स्ट. What was the effect of this miracle? तो ये जो चमत्कार हुआ, पेत्रस ने इस आदमी जो 8 साल से बीमार था उसको ठीक किया, जो तो उसके वजह से क्या क्या इफेक्ट क्या हुआ उसका? क्या? 35. हाँ, all came to the Lord. Verse 35. After seeing this miracle, that this paralytic man got up. So they were amazed, and they saw, and they came to the Lord. Lord, yes. ओके, तो काफी सारे लोग प्रभु में आए हैं. ओके, ऑल राइट, ओके, वेरी गुड. Now, did Peter heal Aeneas? क्या पीटर ने एनियस को चंगाई दी? Jesus healed him. Jesus. करेक्ट. Yes, correct. प्रभु यीशु ने उसको चंगाई दी पीतरस के द्वारा. Now in verse 36 we read about another miracle. वचन What 36, does या Pastor sir? वचन 36 में और एक चमत्कार के बारे में हम पढ़ते हैं. Dorcas. What does Dorcas mean? दोरकस जो शब्द है, जो यहाँ पे एक शब्द लिखा गया दोरकस, इसका क्या मतलब है, कोई बता सकता है? Tabitha, Dorcas. Harini means deer. Dear. Deer. Gazelle, Deer. yeah. It means gazelle, yeah. It is Deer a as Greek in word. the animal deer. Yes. Okay. तो And एक, Tabitha is the Aramaic equivalent of Dorcas. Yeah. अच्छा, यानी हिरन को ये नाम, ये शब्द इस्तेमाल किया गया है हिरन का उस भाषा में, इसलिए डॉर्कस नाम हिरनी की तरह थी. ठीक है. Yes. And Tabitha is the Aramaic equivalent of Dorcas. अरामिक भाषा में इसी डॉर्कस को तबीता कहते हैं. Dorcas. Now, it says that the disciples, when the disciples called Peter, what were the disciples hoping? Were the disciples hoping that Peter would heal Dorcas? तो ये जो डॉर्कस थी, ये बीमार होके मर गई. तो जब शिष्यों ने उसको, पेत्रस को बुलाया, वहां के जो क्रिश्चियन लोगों ने, तो उनको क्यों बुलाया था? आपको क्या लगता है, पेत्रस को क्यों बुलाया था वहां पे? Because Dorcas, she became sick and died. हाँ. So the disciples called Peter because they knew Peter has the gift of Holy Spirit, and that he would, through the Holy Spirit, he would raise the Dorcas. तो ओके, तो आंटी वॉकर कह रहे थे कि क्योंकि पवित्र आत्मा से वो परिपूर्ण था पीटर, तो इसके वजह से उनको लगा मसीह लोग कि ये कुछ कर सकता है, ये उसको जिंदा कर सकता है, इसलिए उसको आमंत्रित किया वहां पे आने के. Yeah, that's what more or less would have there. Dorcas had already died and she has been washed. They were not asking Peter to conduct a funeral for her. So obviously they were hoping that Dorcas would be raised from the dead. Wow, what a faith. यहाँ पे हम देखते हैं कि मसीही जो लोग थे, उन्होंने इस कदर विश्वास वहां पे जताया कि उनको विश्वास था कि पेत्रस आके उसको जिंदा कर सकता है, इसलिए उन्होंने, वो मरी हुई थी फिर भी उसको नहला के उसको तैयार करके वहां पे रखा था, उसके शव को. अमेजिंग. Now it says Dorcas was the woman was full of good deeds, good works and charitable deeds. What do you think was the charitable deeds or the good works that she did?
यहाँ पे लिखा है कि डोरकस ने काफी अच्छे काम किए थे, तो ऐसे कौन से अच्छे काम किए थे डोरकस ने, बता सकते? From the verse that वचनों में जो लिखा है उसमें से हमको क्या पता चलता है, उसने क्या क्या काम किए थे? सिस्टर नेहा बता सकते हैं? सिस्टर नेहा, ओके, यस यस, वचन फर्स्ट वचन 36 वचन में लिखा है। 36 says that she did charitable deeds. Now, if you go read for ahead, अच्छा, हाँ, तो 39 दिया है। तो यहाँ पे क्या उसने क्या काम किया है? विधवाओं को कपड़े, उनके द्वारा कपड़े सिले हुए जो थे, उसके द्वारा वो मदद। yes, correct, yes. No, she knew how to कपड़े, how to make clothes, stitch garments. Yes, And correct, she used this gift to because those days clothes were expensive, and she made tunics and garments for the widows, and they were sure that they had shown Peter, the people showed Peter the tunics and garments that Dorcas had made while she was with them. Correct. अच्छा, Whatever is the smallest gift, I mean, even she knew how to stitch, that was used for God's kingdom. तो विधवाओं के लिए कपड़े बनाना, कुर्ते कपड़े बनाना, ये डोरकस का काम था। तो इसके वजह से वो लोग बहुत दुखी थे और उन्होंने उसको बुलाया था। ये डोरकस का अच्छा काम था कि वो विधवाओं का वहां पे ख्याल रखती थी, उनके लिए कपड़े बनाती थी। तो प्रभु के लिए छोटे से छोटा काम भी मायने रखता है। Anyone? Yeah, go ahead. Now Acts verse 40 says, but Peter put them all out, knelt down and prayed, and turning to the body, he said, Tabitha, arise. And she opened her eyes, and when she saw Peter, she sat up. Now, what is Peter's raising of Tabitha reminds us of something that happened earlier? क्या एक there are other people, एक मरे हुए व्यक्ति को, तबीता को जो मर गई थी, उसको पीटर ने फिर से जिंदा किया। तो इस घटना से आपको और कोई स्टोरी याद आती है क्या जो पहले बाइबल में लिखी गई ऐसी? एनीवन बताइए। सिस्टर अनीता, या गो अहेड नाउ, गो अहेड। ओल्ड टेस्टामेंट में एलिशा और एलिया के टाइम पे, और गॉस्पेल्स में जो 12 साल की लड़की को यीशु मसीह ने जीवित किया, पुनर्जीवित किया। ओके, और कोई कहानी है? हाँ, करेक्ट, 12 साल की लड़की को, इसका नाम भी that is the most nearest yes, correct, similar. Yes, well, Kitty, you were saying the same thing or what? Okay. Talitha, Yeah. Jesus raising Talitha in Mark 5:38 to 42. Okay, Talitha, correct. Talitha, एक लड़की, उसका भी नाम उसका नाम तलीता था, ये तबीता है. That's a difference. Okay, Talitha, yeah, little girl, wake up. Wake up, little girl, I say to you, arise. Wake up. So that's not her name, no? It's just the expression, Talitha Kumi. Yeah. Talitha Kumi. Okay, it's not a name. Okay, it's just yeah. All right. Good. Now, what was the main difference between the two incidents? तो उस कहानी में, उस घटना में, जब यीशु ने उस लड़की को उठाया और यहाँ पे पेत्रस ने इस डोरकस को जैसे मौत से वो फिर से उसको उठाया, इन दोनों कहानियों में क्या फर्क था? There Jesus did it on his own authority, and here Peter, when he raised her from the dead, he did it in the name of Jesus. तो ओके, किटी ने कहा कि वहां पे यीशु ने ये चमत्कार खुद के नाम से किया, खुद के अधिकार से किया है, और पेत्रस ने यीशु का नाम लेके ये चमत्कार किया. Peter prayed to the Lord to raise Tabitha. Yeah. Correct. Yeah. As such, there is no difference. I mean, both the dead people were raised by Jesus. No? Correct. तो दोनों में यीशु ने ही काम किया है. यीशु ने यहाँ पे खुद
निजी तौर पे काम किया, यहाँ पे पेत्रस ने यीशु को प्रार्थना की, इसके वजह से ये हुआ है. Okay, now again we come to the healing of Aeneas and Tabitha. Now, what do you think? What strikes you regarding these two, Aeneas and Tabitha? अभी यहाँ पे दो चमत्कार हुए. एक एनियस जो 8 साल से बीमार था उस व्यक्ति को, उसको ठीक करना, और ये तबीता को जिंदा करना, यानी डोरकास को जिंदा करना. ये दोनों चमत्कारों के बीच में ऐसी कोई खास बात है क्या, या फिर ऐसी कोई चीज है जो आपको स्ट्राइक होती है? इस दोनों को कंपेयर कीजिए. Authority over sickness and authority over even death and resurrection. Okay, authority over death and resurrection. Okay, बीमारी से बाहर निकालना और मौत के से में बाहर निकालना, ये अधिकार दिया है. Okay, any other? Apart from that, any other insights? Okay, लिड्डा में जो हुई बात, और यहाँ पे जो तबीता के साथ हुई, ये दोनों में क्या खास बात है? Okay, Nothing is impossible through Christ. nothing Okay. is impossible. But still, there is some more what you can. Okay, और एक बात है, गहरी बात है, कोई बता सकता है? दोनों चमत्कार है आपके सामने हैं, तो यहाँ पे हम क्या खास बात देखते हैं? Through this authority, people believed. They believed and accepted Jesus. ओके, देखिए वचन 34 में, और हम जो देखते हैं 39 में, ये दोनों चमत्कार है. तो क्या उसमें क्या अंतर है, क्या खास बात है दोनों में? एनीवन, कोई बता सकता है? हाँ, ट्राई कीजिए. सिस्टर ममता, मिसेस मार्कस, सिस्टर नेहा, सिस्टर अरुणा, अनीता सिस्टर मेरी जेम्स, मिसेस तोरा, किटी, एनीवन? No, is there? Yeah. Let's try. Okay, Manoj, go ahead. In both these situations, the healing came at different points in their journey. Aeneas was in bed for 8 years before and was paralyzed before God's transformation happened in his life. Whereas for Tabitha, it was almost immediate. I mean, she had died and then almost immediately she was, it was a lot quicker than it's for Tabitha than it was for Aeneas. Yes. Long suffering. The important thing here to remember is, as Christians, we should be living by God's timing rather than our own. Correct. We have to wait for it. It can happen now. It can happen maybe quite sometime later, but that is according to God's time. We should be waiting upon the Lord. तो यहाँ पे हम देखते हैं कि तबीता नहीं, जो आदमी था जो बीमार था, वचन 34 में, वो 8 साल से बीमार था. उसको 8 साल इंतजार करना पड़ा चंगाई के लिए. और तबीता तो मर गई, लेकिन वो तुरंत उसको जिंदा, यानी उसको बहुत कम समय में उसको ये चमत्कार हुआ, तो राहत मिली. तो यहाँ पे हम देखते हैं कि परमेश्वर जब हमारे जिंदगी में कोई चमत्कार करता है, काम करता है, उसका एक टाइम होता है. वो टाइम के लिए हमको रुकना पड़ता है. कभी कभी जल्दी होता है, कभी कभी बहुत टाइम लगता है. तो हमको परमेश्वर के इसके कार्य जैसे करता है उसके लिए रुकना पड़ता है कभी कभी. So, yes, that's a good point. Yes. What was the repercussion of raising Tabitha from the dead?
I mean, what was the result? तबीता को ठीक करते ही क्या हो गया वहां पे, क्या और क्या बात हो गई? तबीता को उसने जिंदा किया, उसके बाद क्या हो गया चमत्कार? और Many क्या believe, या many believe, no? Yes, Prabhu Thevila. yes, yes. व्हाट्स द आंसर हियर? So they Many came believed in the Lord, no? अच्छा, बहुत लोगों का विश्वास यीशु में बढ़ गया, यीशु में उन्होंने विश्वास रखा जिन्होंने ये चमत्कार देखा. ओके, This is a recurring pattern, no? We have seen over the chapters. I mean, some miracle happening and people seeing it and people starting to believe. करेक्ट करेक्ट. हाँ, तो ये हम हमेशा देखते नए नियम में कि लोग बीमार पड़ते हैं और फिर वो परमेश्वर चमत्कार करता है और फिर बहुत लोग विश्वास रखते चमत्कार देखते. नेक्स्ट. Now, what was this? See, in verse 43, he says that Peter stayed many days in Joppa with Simon a tanner. What was the significance of Peter's willingness to stay with the tanner? तो यहाँ पे लिखा है कि वचन 43 में कि पीटर जो है वो साइमन नाम के एक व्यक्ति के साथ रहा जोपा में, जो चमड़े का धंधा करता था. तो ये इतना क्लियर, ये क्लियरली मेंशन किया कि वो चमड़े का धंधा करता है और उसके साथ पीटर रहा. तो इसका क्या मतलब, इसका कोई खास बात हो सकती है? व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ दैट? एनीवन? वचन 43. Anyone? There must be a reason why his profession was pointed out. हाँ, कुछ तो होगा जिसके वजह से उसके धंधे के बारे में यहाँ पे लिखा गया है कि वो चमड़े का धंधा करता है. Anyone? That's a good question. Good final question. Anyone? Maybe that profession was looked down upon, or good sister Mamta. Yes, वो ऐसा काम था जिसको लोग घृणा करते थे. Okay. Anyone else? और या और कोई बात? Then he was willing to give the hospitality with. He was Peter, you are saying? No, Peter said because this Simon has the gift of the hospitality. Okay. अच्छा, तो साइमन बहुत अच्छे he was willing to take him in. Yeah. हाँ. Actually, see, Jews considered tanners as unclean because they were working with dead animals. So they were ritually unclean most of the time. Correct. And Peter was a true blue Jew. Correct. So they would usually have nothing to do with. Usually, tanners used to live outside the villages or outside the city limits. यानी ये केवल एक घृणा, एक सामाजिक तरीके से खराब बात नहीं थी, ये धार्मिक तरीके से भी एक खराब बात थी, क्योंकि मरे हुए जानवरों को चमड़ा निकालना ये यहूदियों के धर्म के अनुसार ये गलत था. लेकिन पेत्रस एक यहूदी होने के बावजूद उसके साथ जाके रहता है. इसके मतलब ये पुराने नियम के धर्म का एक तरीके से उल्लंघन हुआ है, जो यहाँ पे हमको दिखता है. यह सामाजिक धार्मिक उल्लंघन यहाँ पे होता है कि एक अछूत, यानी एक ब्राह्मण एक अछूत के घर पे जाके रहे, ये उस तरीके की बात है. ओके. Anything else in closing, Manoj? Yeah, now any insights, whatever we have learned from today. तो इस घटना से, पीटर की इस हरकत से कुछ हमको पता चलता है. उसके बाद we look at the chapters inside. Yes, anyone? कि पीटर एक ऐसे लोग के व्यक्ति के साथ जाके रहा जो धार्मिक तौर पे, सामाजिक तौर पे भी उसका बहिष्कार किया जाता है. वो गांव के बाहर रहता था.
तो उस ऐसे व्यक्ति के इस घर पे जाके रहना, आपको क्या लगता है इसमें से हम क्या पता चलता है? यस, एनीवन? यीशु के नजर में सब बराबर है ना? ओके, गुड आंसर। यीशु के नजर पे सब बराबर है। वेरी गुड। आंटी वॉकर? यस, एनीवन एल्स? मिस्टर नेहा, मिस्टर अनीता, मिस्टर ममता, मिस्टर अरुणा। ये बहुत अच्छा चैलेंज है। लास्ट एक ही वचन है, लेकिन इसमें बहुत गहरी बात छुपी है। एनीवन? आप अपने शब्दों में बयान कर सकते हैं, वही बात दोहरा सकते हैं। यू कैन शेयर इट इन योर ओन वर्ड्स, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक ऐसे व्यक्ति के घर जाके रहना, ओके। हाँ, प्रभु के लिए सब एक जैसे। और यहाँ पे हम देखते हैं कि यीशु में आने के बाद हमको भी हम यीशु आने के बाद भी हम भी यहूदियों की तरह यहूदी लोगों के साथ ही रहते हैं। हमको भी हमारा जो फ्रेंड सर्कल है, हम उसी में रहते हैं, बस हम अपने जैसे लोगों के साथ ही रहते हैं। लेकिन हमको ऐसा नहीं करना है। हमको उठना बैठना सब लोगों के साथ है, बहुत जरूरी है। जैसे यीशु खुद वैसे था, यहाँ पे पीटर भी वही क्वालिटी दर्शा रहा है। तो हमको भी देखना है, क्योंकि ऐसे बहुत से क्रिश्चियन लोग हैं जो यीशु में आने के बाद भी जात पात मानते हैं, क्लास को भी मानते हैं शहर में। तो ये गलत है, तो हमको ऐसा नहीं करना है। ओके, एनी अदर इस आज के चैप्टर में से कोई इनसाइट जो This was also a harbinger of the things to come. करेक्ट। हाँ, ये Slowly- चिन्ह था, ये आने वाले समय बातों का एक बहुत महत्व का चिन्ह था। ओके, एनीवन एल्स? और कोई इस आज के चैप्टर से आपको कोई चीज अच्छी लगी, कोई खास बात लगी? एनीवन? Something you found interesting in today's chapter, something very insightful, something touched you, आपके दिल को कोई बात छुई आज के चैप्टर में से? Yes. प्रभु के लिए हर एक काम मायने रखता है और परमेश्वर Yes. का समय सबसे उत्तम समय है, उसके लिए इंतजार करना। करेक्ट। तो लाइक डोरकस की हर एक काम प्रभु के लिए मायने रखता है। वेरी गुड। और उसके समय के लिए रुकना है। यस, एनीवन एल्स? Miracles may happen or may not happen, but as believers, we should always remember that we are saved by what Jesus did for us on the cross. करेक्ट। अच्छा, बहुत अच्छी बात कही किटी ने कि चमत्कार होवे या ना होवे, लेकिन हमको विश्वासियों को याद रखना है कि हमारा उद्धार हो चुका है, यीशु ने जो किया है। तो इसलिए कभी डिस्करेज नहीं होने। बहुत अच्छी, बहुत गहरी बात कही है। वेरी गुड। एनीवन एल्स आज की इस पैसेज में से? या Sure, maybe, but we have to give the gospel in all circumstances. यस, We have to share the word of God. हर एक स्थिति में हमको प्रभु का वचन शेयर करना है, जहां पे भी हो, जिस स्थिति में भी हो। करेक्ट, वेरी ट्रू। एनीवन एल्स? और कोई बात? I would say again, like looking at Barnabas, no? Barnabas sought reconciliation rather than revenge. Correct. As Christians, we are called to be reconcilers. We would need more Barnabases. तो हमको बारनबस की तरह रहना है, कि बारनबस ने सुलह ज्यादा महत्व का समझा बदला लेने के बजाय। ये बहुत बड़ी बात है। Even I found Barnabas very inspiring, that he was willing to stand and speak up for the enemy, so that's a very Christ-like quality, कि एक दुश्मन को प्यार करना हम बारनबस में देखते हैं। ये क्वालिटी we tend to normally side with the crowd, which has the majority. हाँ, हम एक तो हमारे दोस्तों के साथ रहते हैं, हमारे सोशल सर्कल में रहते हैं और उनके जैसे ही बिहेव करते हैं। हम उसी को अपना क्रिश्चियनिटी मान, लेकिन क्रिश्चियनिटी यीशु के पीछे चलना है। और कभी कभी यीशु के पीछे चलने का मतलब अपने से मुंह मोड़ लेना।
क्योंकि बारनबास ने भी अपने रिलेशंस को रिस्क किया डिसाइपल्स के साथ। नहीं नहीं, आप गलत हो, ये सही है बोलना, ये बहुत बड़ा ये हो। तो हमको भी देखना है कि क्या हम यीशु के साथ हैं या हम कम्युनिटी के साथ रहना ज्यादा पसंद करते हैं। कभी कभी हमको भी एक स्टैंड लेना पड़ता है। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। यस यस, ओके, दैट्स इट देन। थैंक यू एवरीवन, ग्रेट जॉब Manoj, excellent work. God bless you and God bless everyone. Thank you, everyone. Good